Assalamu alaikum. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicose Fever. In this lecture, we will discuss about the other clinicals of the nervous system. Number one, we will discuss about the Holoprosencephaly. Other is the Lissencephaly. Then we will discuss about the posterior fossa malformation, in which we will discuss about the Chiari 1 and the Chiari 2 malformation. And last but not the least, we will discuss detail about the Syringomyelia. Number one, by the name represented Holoprosencephaly. अब हमारे पिछली वीडियो में देख सकते हैं जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ द फोर ब्रेन की थी। जो प्रोसेंसेफलॉन है वो किस में चेंज हो जाता था? दे में चेंज इनटू द टेलेंसेफलॉन एंड द डायनसेफलॉन। इफ दे डू नॉट फॉर्मेशन ऑफ द टेलन और द डायनसेफलॉन, इसमें देखें बेसल गैंग्लिया है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। अगर ये प्रॉपर फ्यूज नहीं होंगे, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ द बेसल गैंग्लिया एंड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देखते हैं मेनली क्या होता है। डेवलपमेंट फीड डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द फेलियर ऑफ द एम्ब्रियोनिक फोर ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, जिसमें टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर बन रहे होते हैं यहाँ पे नहीं बनते। देयर इज अ मिसलीडिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल बी डिस्कस यू इज द कॉज, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज द pathway sonic hedgehog pathway, which is the SHH signaling pathway. Other may be defect, it is not important with the cleft palate, cleft lip, and the risk of the pituitary dysfunction, diabetes in spiders. It may be seen with the Tyo syndrome, trisomy 13, and the maternal alcohol use. But the most important is the finding of the MRI finding. In case of the MRI finding, there is a monoventricular, only one ventricle, and because there is a fusion changes into the one ventricle to there is a less development of the two lateral ventricle and they change into the one ventricle. This is called as a monoventricular. And the fusion of the basal ganglia, fusion of the basal ganglia, and this is the monoventricle and fusion of the basal ganglia. And we will discuss about the Lissencephaly. The name represent is the Lissen means that of the smooth area, and this is mainly due to the failure of the neuronal migration resulting in the smooth brain, and that lack Sulci and the Gyri may be associated with the microcephaly, ventromegaly, and I will be discussed with you in this diagram. There is a normal, and here this is the present of the Gyri and the Sulci are present. In this case, Gyri and Sulci are present and the ventricles are proper. But here this is smoothness. Gyri and the Sulci are not present. In this case, on the ये देखें यहाँ पे साइड पे ना गहराई है ना सल्काई है. There is a fusion. It may be due to many causes. It has two types, but we will not discuss here. It's the types of the Lissencephaly. We'll discuss just about the most important MCQs. Discuss is the Lissencephaly is the smooth brain and mainly due to the lack of Sulci and the Gyri. यहाँ पे देखिए smooth brain है. यहाँ पे I will be discussed with you is the smooth brain. Here it is not represented. यहाँ पे क्या है, Sulci and Gyri on the lateral side नहीं present. उसके बाद आ जाता है posterior cranial fossa malformation. अब posterior cranial fossa में यहाँ पे I will be discussed with you is the posterior cranial fossa. तो यहाँ पे क्या है, this is the here there is a present of the posterior cranial fossa, cerebellum is present, and cerebellum after यहाँ पे क्या होती है, foramen magnum होता है. अब foramen magnum से spinal cord निकलती है. अगर यहाँ पे foramen magnum में cerebellum बाहर की तरफ आ जाए, this is called as the Chiari 1 malformation. This is the Chiari 1 malformation due to the ectopia of the cerebral tonsils inferior to the foramen magnum. This is the type 1 structure and usually associated in the childhood, but the most important is the headache and the cerebral symptoms, because there is an involvement of the cerebellum. यहाँ पे क्या है, cerebellum है, तो involvement of the cerebellum and cerebellum का ये छोटा सा part, this is the Chiari 1 malformation, and there is a syrinx, because if there is a pressure developed here, that can lead to the Syringomyelia. But I will be discussed with you is the Chiari 2 malformations. इसमें क्या है, सिर्फ only herniation of the cerebellum, but in this case, in the third diagram, there is a herniation of the cerebellum and the medulla oblongata,
and the most important is the herniation of cerebellum and the medulla oblongata. And this is the non-communicating hydrocephalus. If there is a non-communicating, the hydrocephalus increase in the fluid, yes, CSF increase in the CSF in the non-communicated area, and it is more severe form than the Chiari one. Number third is the Dandy-Walker malformations. In this case, agenesis of the cerebral vermis. This is not so much important, but cystic enlargement of the fourth ventricle. Here, this is a fourth ventricle. There is a cystic enlargement. I am showing with the red. There is a cystic enlargement of the fourth ventricle. Here, there is a cystic enlargement of the fourth ventricle, and associated with the hydrocephalus and the spina bifida. That we all discussed about the posterior cranial fossa malformations, and the most important we will discuss about the last but not the least is the syringomyelia. अब syringomyelia होता क्या है? यहाँ पे हम अगर स्पाइनल कार्ड की तरफ देखें तो स्पाइनल कार्ड का ये पोस्टीरियर वाला पार्ट है और ये जो है दिस पार्ट इज द इंटीरियर पार्ट. अब ये इंटीरियर पार्ट की तरफ इंटीरियर कमिश्चर फाइबर होते हैं. क्या होते हैं? इंटीरियर कमिश्चर फाइबर होते हैं जो कि यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन से फाइबर डिकसेट करते हैं. इन दिस केस अगर ये डिकसेट करते हैं तो ये एफरेंट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, यहाँ पे भी इसी तरह जो डॉर्सल गैंग्लियन है ये इस तरह से आएंगे, जो एफरेंट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे है पेन एंड टेम्परेचर का, ये ब्रेन की तरफ जाएगा और पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन होगी. इफ देयर इज अ कंप्रेशन इन द इंटीरियर कमिश्चर फाइबर, यहाँ पे क्या है, आई विल बी डिस्कस विद यू बाय द डायग्राम इज दैट ऑफ द, यहाँ पर अगर देयर इज अ कंप्रेशन है तो क्या होगा, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस हो जाएगी ऑन द बोथ साइड, बिकॉज यहाँ पे डिकसेट कर रहे हैं तो दोनों साइड के जो पेन होगा और टेम्परेचर होगा वो अफेक्टेड होगा. अब इसमें क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सिस्टिक कैविटी आर द सिर्निक्स विद इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कार्ड. ये जो स्पाइनल कार्ड का जो सेंट्रल कैनाल है इसमें क्या है, सिर्निक्स बन जाता है, एक कैविटी बन जाती है, सिस्टिक कैविटी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉसिंग इंटीरियर कमिश्चर, वही जो मैंने आपको बताया है कि भाई इंटीरियर कमिश्चर फाइबर में जो फाइबर डिकसेट कर रहे हैं थ्रू द एफरेंट लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और ये ब्रेन की तरफ जाएगा तो यहाँ पे डिकसेशन वाली जगह पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. जब भी डिकसेशन वाली जगह पे इफेक्ट होगा तो पेन एंड टेम्परेचर क्या होगा, लॉस हो जाएगा. बट it is the bilateral symptom, bilateral I have discussed because of the decussation, but touch sensation is preserved. The most important MCQs is the touch sensation is preserved associated with the Chiari 1 malformation. अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही है कि ये फोरामेन मैग्नम है और फोरामेन मैग्नम में जो सेरिबेलम है, I will be discussed with you is by the red. This is the foramen magnum, area of the foramen magnum. एंड यहाँ पे क्या है, सेरिबेलम है, सेरिबेलम वाली साइड पे ये फोरामेन मैग्नम में ये प्रोट्रूड कर जाता है. दिस इज कॉल्ड एज द Chiari 1 malformations. एंड मोस्ट कॉमन लोकेशन सर्वाइकल रीजन पे होगी, मोस्ट कॉमन लीजन इन द सर्वाइकल, देन द थोरैसिक, देन द लंबर. क्योंकि सर्वाइकल पे है तो यहाँ पे पेन लॉस है, पेन एंड टेम्परेचर लॉस इन द सर्वाइकल एरिया. देन अदर इज द thoracic area and less common in the lumbar region. That we all discussed about the syringomyelia. In this lecture we have discussed about the Holoprosencephaly, then the Lissencephaly, then the posterior fossa malformations, and we have discussed about the syringomyelia. And thank you so much, we have discussed all the clinicals, and thanks a lot. Allah Hafiz. Please like and subscribe our channel Medicose Fever and remember us in your prayers. Allah Hafiz.